तो हमने फोल्डर बना लिया सिंपल कैलकुलेटर py. Okay, so let's start with make a simple calculator. So make a simple calculator. How we can do? So सबसे पहले हम लेते हैं input, right? Number one is equal to let's go with the and we are taking the floating value. एक floating value क्या है हम समझेंगे आने वाली वीडियो में. Just is a sample. हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं फिर एक असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, राइट? तो फ्लोटिंग वैल्यू क्या है हम बाद में लेंगे. इनपुट कैसे लेते हैं, क्या होता है इनपुट वैल्यू, इस चीज को भी हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे. इनपुट द इंटर नंबर बाय यूजर यूजर फर्स्ट यूजर, राइट? And calling. Then if we taking the num2 into same is a floating value, then take a input, right? Take a input. So what is your input? In the in the number by sorry enter number, yeah, number by user, right? And same calling. Okay. And another variable लेंगे हम उसमें ऑपरेशन. ऑपरेशन, राइट? जिसमें हम इनपुट लेने वाले हैं हमारे ऑपरेशन के कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं. तो टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, taking the input from the user, positive, minus, input, and that, right? Save the repetition of the sound. Okay. Perform the task. Perform the task. तो what we'll do, सबसे पहले हम if else फंक्शन का यूज करेंगे. तो how will do, so let's get started. If the operation is equal to what plus, then result result is equal to num1 plus num2, right? Similarly, we using the another function is the elif function. Elif operation is equal to minus, right? Then result equal to num1 minus num2 enter. Then another elif function, that is the elif operation is equal to, अगर सेम फंक्शन का यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन result will perform the task num1 multiplication of num2, right? Similarly, we give it another function can perform the operation. So is equal to num1
सॉरी, अगर से यहाँ परफॉर्म होता है डिवाइड, राइट? तो इसमें क्या होगा? सो इसमें सबसे इलिफ के अंदर और एक ऑपरेशन होगा कि अगर जीरो की प्रॉब्लम, जो डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो बहुत बड़ा फंक्शन हो जाता है जो डिवाइडेड नहीं होता। इस कारण से इसके अंदर और एक हम परफॉर्म टास्क परफॉर्म करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से होगा। इफ इफ ऑपरेशन, सॉरी, इफ num2 not equal to के लिए that is sign not equal to zero, right? Not equal to zero, then the result is what is the result? Num1 divided by num2, right? That is our result. And otherwise, else perform task with the result equal to, that is a result equal to error, error, right? Error, error. Simultaneously, that's else function are used on, we are using on that else result equal to, its result equal to invalid number, in invalid, invalid number, right? And finally, we going to print, we going to print or result, right? We are going to result. Then see that's हमारे, हमें और यहाँ पे बना ली सिंपल कैलकुलेटर। लेट्स सी ये कैसे दिखता है, हाउ डज परफॉर्म। तो हम टास्क रन, ओके, लेट्स रन 5 इंटर 4 इंटर प्लस, that is your result 5 plus 4 9। so taking your another, और हम और कुछ ट्राई करते हैं। जैसे व्हाट यू विल डिवाइड, राइट? ओके, हम डिवाइड करते हैं इसे 20 इंटर 5 इंटर डिवाइड, what is the answer? That is a 4। awesome, so let's go guys, we make the first calculator जो बहुत इजी था, जिसमें हमने क्या क्या सीखे वो समझ ले। दैट इज ए वेरिएबल, इनपुट फंक्शन, किन किन फंक्शन का यूज हुआ है। दैट इज ए वेरिएबल इनपुट फंक्शन, फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है, इनपुट कैसे देते हैं, देन टास्क परफॉर्म के लिए इफ फंक्शन क्या चीज है, और देन फाइनली प्रिंट फंक्शन। इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे एनुअल क्लास के अंदर, जस्ट डेमो क्लास। लेट्स गो गाइस, लेट्स योर first uh, your first assignments before your learning. Will